माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Honorable members, please sit down. On behalf of the whole House and on my own behalf, I congratulate Ms. Hima Das for winning the gold medal in the 400-meter event at the IAF World Under-20 Athletics Championships held at Tampere in Finland on the 12th July of 2018. The victory of Ms. Hima Das is all the more significant as she has become the first Indian woman to win a gold medal in a track event at a World Championship. Hailing from a small village in Nagaon, Assam, and reaching pinnacle of achievement, I am sure she will inspire millions of our youth and budding sports persons to excel in their field of sports. We, the entire House, wish Ms. Hima Das all success in her future endeavors and hope that she would continue to make the country proud by bringing many more laurels in the coming years. Honorable members, I wish to make an announcement. Many of the members of this House have been demanding Wi-Fi facility inside the chamber so that the information from various government websites can be downloaded by them on their mobile, tablet devices. I am happy to announce that with the efforts of our Minister of Electronics and Information Technology, Sri Ravi Shankar Prasad ji, and MOS Mighty, Sri S.S. Aluvare ji, our Rajya Sabha chamber has become Wi-Fi enabled. I congratulate and thank both the ministers and also place on record the appreciation for the team, NIC engineers, who have completed this work in a short span of time. Using the Wi-Fi facility inside the chamber, honorable members can now browse all the government websites, including the websites of the Parliament. The facility is accessible on all the mobile phones, tablets, laptops, etc. The user name, password already being used by the members for accessing the Wi-Fi on their mobile devices in Parliament complex will work inside the chamber also. In case honorable members wish to register any new mobile device, they may get it done from the NIC help desk. The Wi-Fi facility inside the chamber will be restricted only for the government, Rajya Sabha and Lok Sabha websites. However, using Wi-Fi facility available in the lobbies, inner and outer lobby members may access any website on the internet as far as the lobby is concerned. Papers to be laid on the table. Dr. Jitendra Singh. Dr. Jitendra Singh. Chairman, sir, with your kind permission, I beg to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 1 in today's revised list of business. Thank you. We have given up begging 1 year back. You are lagging behind. Please. I repeat my suggestion that members or ministers can say, so I raise to present a report. They need not beg. No? Okay. Sri, it is not on par. थोड़ा इंडियनाइज करके बेहतर होगा. We are no more in Korean rules. श्री किशन पाल गुजर. सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं. आज मैंने कुछ देखा. शरद जी, ये सही है क्या? आप आज का दिन में कुछ 50 साल और 52 साल के पहले लेजिस्लेचर में एंटर किया, ऐसा है क्या? July 19th or somewhere I read it. Okay. Message from Lok Sabha. Secretary General. I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 18th of July 2018 passed the Right of Children to Free and Compulsory Education Amendment Bill 2018.
I lay a copy of the bill on the table. Reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs. Sri Samsher Singh Manhas. Ji. I rise to present the following reports in Hindi and English of the Department related Parliament Standing Committee on Home Affairs. 212th report on action taken by government on the recommendation observation contained in the 204th report on administration and development of Union Territory of Lakshadweep and 213th report on security situation in northeastern state of India. Report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Personal, Public Grievances, Law and Justice. Sri Majid Memon. Sir, I rise to present the 97th report in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on draft public servant declaration of assets and liabilities and minimum values of assets for condonation or exemption rules 2017 as listed against my name in today's revised list of business. Reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Chemical and Fertilizers. Sri Vijay Pal Singh Tomar. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध रसायन उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 3 प्रतिवेदन सभा स्थल पटल पर रखता हूँ। Number 1, 4/6 report on the subject promotion and coordination of the basic applied and other research in areas related to the pharmaceutical sector of the Ministry of the Chemicals and Fertilizers, Department of Pharmaceuticals. Second, 4/7 report on action taken by government on the recommendation contained in the 14th report, 16th Lok Sabha on the subject implementation of the new urea policy 2015 of the Ministry of the Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers. And third, 48th report on action taken by the government on the recommendations contained in the 43rd report, 16th Lok Sabha on demands for grants 2018-19 of the Ministry of the Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers. Thank you. Reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Rural Development. Sri Samsher Singh Dhillon. I raise to lay the 49th, 50th and 51st reports of the Committee on Rural Development as listed against my name in today's order paper. Thank you, sir. और एक हो गया दिया ना Samsher Singh Dhillon. Already rural development, yes. He has placed it. Reports of the दूसरा भी है आप Samsher Singh? Sir, हाँ. I raise to lay Statement of the Department action related taken- Parliamentary Standing Committee on Rural Development. Samsher Singh Sir, Dhillon. I raise to lay the action taken statement showing further following up action or recommendation contained in action report of the Standing Committee on Rural Development as listed against my name in today's order paper. Thank you. Reports of the Public Accounts Committee. Sri Bhuvanesh Kalja. Sri So I present before the table of the House the paper mentioned against my name in today's list of business. Thank you. Now, 0 hour. Professor Ram Gopal Yadav. धन्यवाद श्रीमान। एक मिनट में बोलना आपके बाद फिर गुलाम नबी जी भी है इसलिए थोड़ा शेयर श्रीमान 0 आवर में 3 मिनट तो बोल ही जाता है। 3 मिनट में 2 लोग बोलना है प्लीज तो गो अहेड। श्रीमान ये जो मामला मैं उठा रहा हूँ वो बहुत ही मैंने स्वीकार नहीं मामला किया है। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी जिसमें दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके हायर एजुकेशन में आरक्षण को छीनने की, ख़त्म करने की पूरी तरह से साजिश को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। सर, हुआ ये था कि 21 जुलाई 97 को SC ST के लिए हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। उसके बाद 4 मार्च 7 को OBC के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण हुआ लागू। DOPT ने 200 पॉइंट का रोस्टर बनाया, लेकिन अभी
उसके आधार पर सबको 27%, 15% और 7.5% रिजर्वेशन मिल रहा था। लेकिन यूजीसी ने 5 मार्च 18 को एक विभागवार रोस्टर का आदेश दिया, 13 पॉइंट रोस्टर। रोस्टर माने जो क्रम निर्धारण होता है पदों का, उसको कहते हैं। तो इस 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से ये हो गया कि पहली, दूसरी, तीसरी जो पोस्ट होगी वो अनरिजर्व्ड होगी, चौथी ओबीसी को होगी, 5वीं, 6वीं अनरिजर्व्ड होगी, 7वीं शेड्यूल कास्ट को होगी, 8वीं ओबीसी को होगी, 9वीं, 10वीं, 11वीं अनरिजर्व्ड होगी, 12वीं ओबीसी को होगी और 13वीं अनरिजर्व्ड होगी। मतलब ये हुआ कि इन 13 सीटों में 9 अनरिजर्व्ड होंगी और 4 जो हैं उनमें 3 ओबीसी और 1 एससी का उम्मीदवार होगा। एसटी कभी कोई रिजर्वेशन इसके बाद नहीं एसटी को मिल सकता। और जो संविधान ने अधिकार दिया है, जिस पर इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सील लगाई थी, मोहर लगाई थी, उसके खिलाफ जाकर ये जीओ हुआ है। और नतीजा उसका ये हुआ है, देखिए मानसिकता ये है, इसलिए होता है, इस देश में 496 वाइस चांसलर हैं, उनमें 6 शेड्यूल कास्ट हैं, 6 शेड्यूल ट्राइब हैं और 36 ओबीसी हैं। होना चाहिए थे लगभग 50%, लेकिन केवल 9.6% वाइस चांसलर्स हैं। जब इस तरह के लोग होंगे, उन पदों पर बैठे होंगे, दलितों का, पिछड़ों का, शेड्यूल ट्राइब का कोई भी प्रतिनिधि वहाँ नहीं होगा या नाम मात्र का होगा, तो इन वर्गों को कोई न्याय नहीं मिल सकता। इन वर्गों को न्याय देने के लिए मैं चाहूँगा माननीय मंत्री जी अगर हैं यहाँ, तो ये घोषणा करें कि जितने एडवर्टाइजमेंट अभी तक निकाले गए हैं उन सबको रोक दिया जाए, उनके इंटरव्यू रोक दिए जाएं, जो इस आधार पर अपॉइंटमेंट हुए उनको नल एंड वॉइड किया जाए और पिछड़े, दलितों और आदिवासियों या शेड्यूल ट्राइब को न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। You want to associate? All to. Yeah, I have some more names. Let me complete that. I have some more names. Then you can all associate. माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं चेयर से निवेदन करूंगा कि ये भावना सिर्फ यादव जी और मेरी नहीं है, ये भावना देश की भावना है। तो ये 2 मिनट में ये बात खत्म होने वाली है नहीं, इसमें चर्चा, पूरी व्यापक चर्चा होनी चाहिए। रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, पहले SC ST की थी। 1993 में जब डॉक्टर साहब और हम सब गवर्नमेंट में थे, नरसिम्हा राव जी की, गुलाम नबी जी समय, उस वक्त, उसमें खत्म करो, उस वक्त से रिजर्वेशन बैकवर्ड की भी हुई। ये जरूरी है। नहीं, डिस्कशन चाहिए तो अलग करेंगे, मगर अभी मंत्री भी है, मंत्री का समाधान से संतुष्ट नहीं हो तो करेंगे। मंत्री को भी पता होना चाहिए, उसी के लिए बता रहा हूं, और देश को भी मालूम होना चाहिए कब आई। तो तब से ये रिजर्वेशन चल रही। जैसे अभी यादव जी ने बताया कि पहले DOPT ने 200 पॉइंट्स को लेकर रिजर्वेशन बनाई थी, जिसमें 50% रिजर्वेशन मिलती, लेकिन अब 13 पॉइंट को लेकर बनाएगी, जिसमें रिजर्वेशन कम हो जाएगी और SC ST और ST की तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। सर अगर देखेंगे, मैं 2 सिर्फ गाइडलाइंस पढ़ता हूं। एक तो गाइडलाइंस है UGC गाइडलाइंस फॉर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी 2006 clearly states, I quote, the practice of creating department-wise cadre, which tends to create a single post or cadres with artificially reduce the number of posts in order to avoid reservation is strictly forbidden, unquote. तो 2006 का जो UGC की गाइडलाइंस है वो फॉरबिडन करती है कि ये बिल्कुल एक रिजर्वेशन को खत्म करने का एक आर्टिफिशियल तरीका अपनाया जा रहा है, इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अभी नई जो गाइडलाइंस हैं UGC की, जो सर्कुलर है 5 मार्च 2018,
on the direction of the Ministry HRD, each department in a university should be treated as unit. Thus, if the number of posts per department is 1 or 2, no reserved posts will be available. सर मुझे खुशी है कि पहली दफ़ा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 50% रिजर्वेशन शुरू की और जितना बैकलॉग था उतना खत्म किया और नए जो इंस्टीट्यूट्स बने 6 उनमें से 50% रिजर्वेशन अभी जारी है, इसलिए इस रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर रहे। अशोक सिद्धार्थ, जो नेम्स मैंने एडमिट किया, मेरा कर्तव्य होता है कम से कम उनको बुलाए, बाद में जिनको एसोसिएट करना और धन्यवाद माननीय सभापति जी। माननीय सभापति महोदय, एक ही मिनट में, हाँ प्लीज। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में SC, ST और OBC के लोगों को आरक्षण इस मकसद से देने का काम किया था कि वो जीवन के अपने सभी पहलुओं में तरक्की और विकास कर सकें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मानवर कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के 70 वर्ष के बाद भी भारत के संविधान में दिए गए आरक्षण को आज तक पूरा नहीं किया गया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत की केंद्र में सरकार में रही सरकारों ने उनकी नीति और नीयत में हमेशा से ही अंतर रहा है। मानवर, पहले जब भारत का संविधान अंगीकृत किया गया, नहीं, अभी आपका मांग क्या है? पॉइंट सर वही बोल रहा हूं। टाइम है नहीं ना, एक मिनट सर, आधा मिनट में बोल रहा हूं। आपका मेन डिमांड सर, वो मेन डिमांड ये है कि सर पहले कहा जाता था कि अवेलेबल नहीं है, फिर कह दिया कि योग्य नहीं है, फिर कह दिया कि अवेलेबल भी है, योग्य है, लेकिन नए सिस्टम से लागू नहीं होता है। जैसे यूजीसी में, यूजीसी के जो 5 मार्च के जो माननीय रामगोपाल जी ने कोट किया है, उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि न सिर्फ उत्तर भारत में या दक्षिण भारत, पूरे देश में SC, ST, OBC के छात्रों में रोष व्याप्त है। इस वजह से रोष व्याप्त है कि सर मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे पहले जब लागू हुआ था आरक्षण, तब से लेके आज तक वैकेंसी नहीं आई, लेकिन जिस दिन से ये रोस्टर, जिस दिन से ये सर्कुलर आया, सर्कुलर के बाद से प्रतिदिन सर ये वैकेंसी आई है। 3 तारीख को आई है, 8 तारीख को आई है, 10 तारीख को सर, 10 तारीख को आई है, रेगुलर आ रही है सर। यहाँ तक कि JNU में पुनिया जी का नाम भी जोड़ना। Yes, I am coming to that now. So I would like to hear from the minister, because it's an important issue. Though there is no rule, but at the same time, minister is available here. I have already sensitized him. Let him respond, so that it will help us to come to. सभापति महोदय, सदन में बहुत सारे सदस्यों की जो भावना है, मैं उससे बिल्कुल उनके साथ हूँ। हम सब साथ हैं और सभी साथ हैं। क्यों? 2 बातें हैं। क्योंकि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये यूजीसी ने अचानक सर्कुलर नहीं निकाला, इसको फोर्स हुआ एक तरह से, क्योंकि ये निर्णय कोर्ट का है और कोर्ट माने केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कायम किया। एक मिनट प्लीज मंत्री बोल रहे हैं ना, मैं बता पुनिया जी आप सीनियर है, बैठिए ना, सुनिए। मिनिस्टर अब बैठ जाइए प्लीज। मिस्टर पुनिया, प्लीज सिट डाउन। इफ इज मिसरीडिंग द हाउस, देयर इज अ वे। एक मिनट सुनो। डोंट मिसरीड द सिचुएशन, प्लीज बैठ जाइए। नो, एक मिनट। आई विल नॉट अलाउ एनी सच इंटरप्शन, प्लीज। लेट मी मेक, एक मिनट मिनिस्टर 1 minute मिनिस्टर, let me make it very clear. Siddharth, sit down. I will not allow any cross questioning or intervention without permission. You are such a senior man, you try to understand. You don't want discussion, then I will go to next issue. सर, अरे बात होने दो ना, क्यों इतना आप घबराए होते हैं बीच में? मैं फिर Please, this is not the way. I have to name you. That's not a good thing for you. मैं सदन में असत्य नहीं बोल सकता। The chair says also 3 times you defy the chair. ये कोई पद्धति है क्या? नहीं, तो सर ऐसा है इसमें कि जो पद्धति हमारी थी और जो सही थी,
कि यूनिवर्सिटी एज ए यूनिट पकड़ना चाहिए और डिपार्टमेंट ये यूनिट नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के आरक्षण को हानि होती है, उनको नुकसान होता है। और हमने एक एक यूनिवर्सिटी का पूरा नक्शा तैयार किया कि अगर इस डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर करेंगे तो कितना नुकसान होता है, और अगर ये करेंगे यूनिवर्सिटी एज ए होल एक यूनिट मानते हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी को न्याय कैसे मिलता है। हम तो इसी लड़ाई के हिस्सेदार हैं। मुद्दा यह है कि ये कोर्ट ने जो ये प्रस्थापित रीति थी वो क्वैश कर दी है, और क्वैश करने के कारण ये एक सर्कुलर निकालना पड़ा। तुरंत उसी दिन हमने सभी संबंधित विभागों से चर्चा करके 2 एसएलपीज दायर किया है। एक यूजीसी ने भी एसएलपी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और एक एसएलपी दायर किया है एमएचआरडी करके हमने भी किया है। तो ये 2 एसएलपीज दायर की है। अब 13 अगस्त उसकी तारीख है। अब 13 अगस्त के पहले भी ऐसा एक, क्योंकि हमारी मान्यता है कि यह आरक्षण बना रहना चाहिए, आरक्षण पर आंच नहीं आने देंगे और किसी को लाने भी नहीं देंगे। चलो। और इसलिए कोर्ट के निर्णय से हम सहमत नहीं है। राइट। कोर्ट के निर्णय से हम सहमत नहीं है, इसीलिए एसएलपी किया है, और मुझे विश्वास है कि न्याय होगा, न्याय मिलेगा और यह आरक्षण हम बचाएंगे। थैंक यू। लेकिन और इसलिए बीच में वही कर रहा हूं। थैंक यू। और प्लीज इसके बीच नो में क्रॉस टॉक प्लीज। इसके बीच में कुछ विश्वविद्यालयों ने वैकेंसीज डिक्लेयर करके इंटरव्यू का भी शेड्यूल किया था। हमने कल ही आदेश देके, लिखित आदेश देके, और क्योंकि पहले ये दुविधा थी कि कोर्ट का मसला है तो कोर्ट के अवमानना नहीं होगा, लेकिन आज मैं सदन का प्रोटेक्शन में हूं तो आपको ये मैं आश्वस्त करता हूं कि हमने आदेश दे दिया है। इंटरव्यू सारे रोके हैं, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भर्ती नहीं होगी, आरक्षण बचेगा और आरक्षण को कभी हानि नहीं होने देगी। थैंक यू मिनिस्टर। श्री टी.के. रंगराजन, श्री टी.के. रंगराजन, नेक्स्ट इशू टी.के. रंगराजन on Swami Agnivesh. एक मिनट की परमिशन दे दीजिए। If you want further discussion, give a notice. You can. ये तरीका नहीं है. This is not the way. I will not allow it. I will not allow it. जेएनयू में बच्चों ने जय भीम कहा तो You want answer, solution, or you want only this thing? Anybody, minister, whoever has got any doubt, call the honorable members to your chamber, discuss with them. Sri T.K. Rangarajan. Thank you, Chairman. Nothing going on record except Rangarajan. The House should condemn this atrocious. No, he is in between now. Let him complete it, then I will call you. Let him complete, I will call you. Thank you, Chairman. The House should condemn the atrocious attack on Swami Agnivesh. Age 18 was kicked and punched and showed a black flag allegedly by a group of Janata Yuva Morcha and Bajrang Dal ABV activities at Pakur, Jharkhand on Tuesday. He was treated by the team of doctors, and when he wanted SP and DM, they did not turn up. He called them, they did not turn for help. Only public around that area, the public saved the Swamiji. Sir, the House must condemn. So already Supreme Court has condemned about the cow protection, leeching, love jihad, moral policing, gang rape, kitawa. That has become the order of the day. So I request the chair, please condemn these type of atrocities going on, and this Yuva Yojana and ABV and Bajrang Dal should be treated, arrested and put in jail. Sri Sanjay Singh, up. धन्यवाद सभापति। Sanjay Singh, yours is next. Sanjay Singh, first. धन्यवाद सभापति महोदय। Please, let them. धन्यवाद सभापति महोदय। Are doing this. No, let us not politicize the issues. You will not get justice. विषय पर आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया है Sri महोदय। Sanjay Singh, मान्यवर, same issue. देश में हो रही हिंसा की घटनाएं पूरे राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। स्वामी अग्निवेश You have to associate.
You have to स्वामी associate. अग्निवेश जी के साथ जो कुछ भी घटित हुआ झारखंड के अंदर, वो इस बात को दर्शाता है। You have to ये associate, दो- please. मैं associate कर रहा हूँ इतना ही. एक मिनट तो सर, First issue is एक मिनट different. सर। First issue was the एक larger मिनट issue. सर। I have वो allowed इस it. बात को दर्शाता है कि आज Then every issue will be like that करने only. वाले लोगों को, नफरत फैलाने वाले लोगों को, मारपीट करने वाले लोगों को Please. सरकारी No, no, you are- संरक्षण प्राप्त है you मान्यवर। have enough और ये experience. बात मैं इस बात को इसलिए कहना Right. चाहता हूँ Right. कि सरकार के मंत्री Right. Sanjay Singh. सरकार के मंत्री सर सीपी सिंह जो Sir, सरकार के He's on his मंत्री neck. He's already saying. झारखंड में सरकार के मंत्री सीपी सिंह ने स्वामी अग्निवेश जी के साथ जो कुछ भी घटित हुआ उसको जायज ठहराया है। पूरे सदन को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। Right. हम हिंसा की छूट नहीं दे सकते। Right. एक 30 सेकंड का प्रश्न तो अलग है माना। प्रधानमंत्री जी वाराणसी से सांसद है नहीं नहीं कोई संबंध नहीं उसमें. गंगा संजय सिंह. गंगा संजय सिंह. गंगा की सफाई- गंगा विषय दूसरा आ रहे. एक 30 आप क्यों? सेकंड। अरे आपका विषय आ रहे आगे. आपका विषय आगे है. This is not going on record. 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 Shri Sanjay Singh. क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है सर। You don't want? Then I'll go to Nothing is going on record. Nothing of this or that is going on record. Both sides. Both sides. Nothing is going on record. Please, आप लोग बैठिए. Sanjay Singh, this is too much. Too much. Too much. Don't do it like that. Please, बैठिए आप जाइए. बैठ जाइए. Sanjay Singh. संजय कुछ नहीं, आपका रिकॉर्ड में नहीं जा रहे. आपका गला खराब होगा मगर कुछ सोल्यूशन नहीं होगा. कुछ नहीं होगा. Nothing will go on record including from the beginning. उत्तर प्रदेश में समेकित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. देश में 15 लाख आंगनबाड़ी हैं, 13 लाख सहायिका हैं और ये जिस विशेष कार्य में कार्यरत हैं इनका काम रोका जा रहा है. आज जो उत्तर प्रदेश में कुपोषित गर्भवती महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर खाना, फल, दूध, घी दिए जाने हेतु हौसला पोषण मिशन और बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिचड़ी, दलिया आदि दी जाती है, वो योजना बंद की जा रही है. मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि हौसला पोषण मिशन एवं हार्ट को योजना को पुनः शुरू किया जाए और 7वीं जो राष्ट्रीय वेतन आयोग है उसके माध्यम से उनका बहुत कम वेतन है. एक का है 4,000 जो कार्यकर्त्री हैं, 2,000 है जो सहायिका हैं. आज जो महंगाई का इस सब सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए इन सबको वेतन भी बढ़ाया जाए और हर महीने उनको वेतन मिले. इनको बहुत 6-6 महीने, 7-7, 8-8, 9-9 महीने तक इनका वेतन नहीं मिलता. कृपया इस पर ध्यान दें और निर्देशित करें कि ये सारी चीजें इनको समय पर वेतन मिले और वृद्धि के साथ वेतन मिले. आपका आभारी होंगे. 6, 7. Thank you. Sri KTS Tulsi. है? हाँ. Drawing the attention of the August House to an important question by which thousands of Indians in the United States are in dire straits because of the change of policy of H-1B visa, and they are facing deportation. US administrations made it more difficult to get extension of visa as a result of the 22nd February 2018 policy memorandum that has been issued, which requires detailed documentation and more evidence is not permitted for specific assignments and specialty occupations. On 13th July 2018, the US Citizen Service issued another circular to deny visa without giving an opportunity to produce more evidence. And even if there is a lack of initial evidence, the visa can be declined, which is too subjective, and it entirely depends on the whim and fancy of the officer concerned. This has resulted in 43% drop in the top
7 Indian IT companies, and they are experiencing more difficulty in being able to hire Indian talent. Despite the fact that there have been 3 meetings between the Honorable Prime Minister and the US President, we do not know whether this critical issue was ever taken up, and if it was taken up, what is the result of the same? Thank you, sir. Thank you. Sri Prasanna Acharya. Thank you, Chairman, sir. Sir, there was a Prime Minister in this country, late Lal Bahadur Shastri, who was chanting the mantra, Jai Jawan, Jai Kishan. But now a time has come when we are saying, Maro Jawan or Maro Kishan. Please. Please, please. मैं बोल ऐसा नहीं सदन से ऐसी शब्द बाहर नहीं जाना. Please, you are a very senior person. Sir, That is not. there is report of farmer suicide coming from one part or other part of this country. नहीं जाएगा. ये शब्द निकाल देना चाहिए. Please. My statement is not negative, sir. Right. I am not negatively saying this. Sir, but sir, there is report of farmer suicide from one part or other part of the country every day. That is one side of the picture. The another side of the picture is there is report of suicide by our soldiers, our Jawan, in large number in this country. That is most alarming. Therefore, I said Maro Jawan or Maro Kishan. But no, that will not go on record. Okay, sir. I do admit. Sir, for the kind information of you and for this house, sir, last year 500 Jawan committed suicide as per the report. And every year the number of suicide by Jawans is increasing. And not only suicide, there is also a report of fratricide by the Jawans. One Jawan killing the officer, one Jawan killing the other Jawan. It is a very alarming situation. Why this is happening? Has the government gone detail into it? Has the government tried to know the reason why our Jawan who are protecting the country in the border, they are themselves committing suicide? What is their misery? Why they are doing this? So, sir, this is a very, very alarming situation. And, sir, in most of the cases, the personnel deployed, one of the reasons of committing suicide is Jawans are deployed far, far away from their home in the border area. And, sir, there is also allegation of bad quality of food. As you know, last year, a BSF Jawan came in the social media and complaining about the bad quality of food. It is most alarming. And, sir, Jawans are applying for leave. They are away from their houses, their parents, their wives, their children, and they are not allowed to leave on time. That is one of the reasons why Jawans are committing suicide. And there are so many, the Sahayak system is prevailing in the army. The lower cadre Jawans, they are deployed in the house of the officers. They are used like servants. They are taking care of the pets. They are taking care of the children. They are taking care of the kitchen. Is it the duty of the Jawan of this country? And they are feeling humiliated. That is one of the reasons also. Right. Sir, Sarah Devara region. Sir, the Defense Institute of Psychological Research, they conducted a study on the suicide and fratricide and has recommended some remedial measure. I would like to know from the government what step the government has taken to implement that recommendation of this committee, sir. And, sir, my suggestion to the government would be that the government should constitute an independent body consisting of psychologists, social scientists, and retired defense personnel to have an independent study of the various regions and recommend solution. Thank you. This is my humble submission to the government. Sir. Thank you. Sri Harivansh. धन्यवाद सभापति जी. मीडिया की पृष्ठभूमि से हूँ, पूरी आज़ादी का समर्थक, पर वह आज़ादी जो बेगुनाह लोगों की जान ले ले उस पर गौर करना होगा. हम जैसे लोग आज भी गांधी के आत्मनियंत्रण के पक्षधर हैं, पर हर जगह हर संस्था सीमा का अतिक्रमण कर रही है. सोशल मीडिया का कुअसर उसके लाभ से ज़्यादा गूंज रहा है. यह वरदान है या अभिशाप? यह समाज को आगे ले जा रहा है या अराजक अनियंत्रित बना रहा है? ये सवाल पूरी दुनिया में बहस के केंद्र में है. अमेरिका की सीनेट के सामने सोशल मीडिया के संस्थापकों को बताना पड़ता है कि उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे विज्ञापन और उत्तेजक बातें छापी. दुनिया के दूसरे देशों में भी समाज पर सोशल मीडिया के असर को लेकर गंभीर और स्वस्थ बहस चल रही है, पर भारत में यह बहस नहीं, इसके महज असर की चर्चा हो रही है. प्रामाणिक सूचना है कि 2010 से अब तक सोशल मीडिया के अफवाहों से 33 बेगुनाह लोगों की जान गई. हाल में त्रिपुरा में सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के बाद 2 लोगों की हत्या हुई. महाराष्ट्र के धुले में 5 लोगों की जान गई.
कोई किसी को धमकी दे सकता है, कुछ भी लिख सकता है, कह सकता है। एक दल के प्रवक्ता को धमकी दी गई कि उनकी बच्ची के साथ रेप होगा। असम पुलिस को अलग सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर रोज रोज फैलाई जा रही अफवाहों की असलियत को रोकने की कोशिश हो रही है। कभी गौ हत्या, कभी बच्चा चोरी, कभी उन्माद की अफवाह, फिर भीड़ तंत्र का अराजक होना। इसका समाधान क्या है? दो ही रास्ते हैं, कानून और तकनीक। आज तकनीक की दृष्टि से इसको किस रूप में नियंत्रित किया जा सकता है और आत्म नियंत्रण में लाया जा सकता है, ये कोशिश होनी चाहिए। आपके माध्यम से सदन को और देश को आगाह करना चाहूंगा कि दुनिया भर के जाने माने शिक्षाविद लगभग 7 माह पहले मैनचेस्टर ग्लोबल मीडिया समिट में एकत्र हुए। उन्होंने नई जनरेशन के लिए कहा कि वी आर ऑल नर्वस अबाउट चिल्ड्रेन विथ स्मार्टफोन्स। द इंटरनेट विथ सोशल मीडिया इनेबल्स देम टू नो जस्ट अबाउट एनीथिंग। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा भारत में थे कुछ महीनों पहले। उन्होंने कहा कि भारत की जो 300 वर्ष पुरानी शिक्षा पद्धति है उसको बदलकर सिलेबस इंडस्ट्रियल एज के अनुरूप बनानी चाहिए और साथ इसका जो दुरुपयोग हो रहा है इस पर आत्म नियंत्रण की कोशिश होनी चाहिए। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि इस गंभीर विषय पर देश गौर करे और अंत में न्यायपालिका ने भी इस पर गौर किया है और उन्होंने लिंचिंग की बात उठाई है। हमारे देश में न्यायपालिका की शानदार भूमिका रही है, अतीत रहा है, पर शायद कानून का प्रताप रहता तो भीड़ ऐसे काम नहीं करती। दशकों बाद न्याय मिलते हैं। अरुण शौरी की चर्चित पुस्तक आई है अनीता गेट्स द बेल। मामूली कोर्ट्स में क्या आज न्याय पाने के लिए 20-25 वर्ष समय लगते हैं। अगर न्यायपालिका सही ढंग से काम करे तो शायद कानून का असर हो और इन चीजों को नियंत्रित करने के लिए जो कानून बने उसका शायद प्रभावी असर पड़े। मैं आपके माध्यम से यह करता हूं कि सरकार और देश इस पर गौर करे। धन्यवाद। मंत्री जी, अभी आनंद शर्मा जी, नोटिस दिया गया है, इस पे सदन में पूरी चर्चा होनी चाहिए। ये एक राष्ट्र की चिंता का विषय बन गया है जो देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। जिस तरह अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, कानून बिल्कुल टूट चुका है और इस पे उच्चतम न्यायालय ने भी चिंता व्यक्त की है। इसलिए इस सदन को इस पे चर्चा करनी चाहिए, हमारा आपसे आग्रह है। देखिए, दिस इश्यू ऑफ misuse of the social media is a larger issue and also a sensitive and serious issue. We can't come to conclusions on one side and you can't take unilateral action also. The moment government does something, then there will be criticism and also opposition. And then at the same time, can you allow this situation to go on? What is happening? So keeping this in mind, I can only suggest to the government to hold discussions with all the stakeholders, including political parties, and then try to evolve a national policy, because this will have international ramifications also. We can't simply take action. So keeping that in mind, depending on the time available, we'll see whether we can have a separate discussion. Otherwise, I suggest to the Minister, Sri Ravi Shankar Prasad, I have seen in between also, he was also concerned and he also said it's a very sensitive issue. Let him hold discussion with all the stakeholders, including political leadership, and then come with some solution and share with the House subsequently. To kind permission, sir, if you allow me. Please. I don't want to name a group, sir. I have already issued notice to him. If you are equally responsible for your technological platform, if it is being used in large number for abuse. They have reverted to me. They're also educating, sir. We are taking, but this session I take on board, sir. Right. I'll hold a consultation. Thank you. Sri Sukhendu Sekhar Rai. Thank you, sir. Sir, the country is confronted with growing numbers of this mob lynching, and it is based on fake news and rumors in social sites. Somebody also say that social sites have of late become anti-social sites, and also on the basis of organized conspiracy. Day before yesterday, that is on 17th of July, the Honorable Supreme Court bench, headed by the Honorable Chief Justice, while passing a 45-page order on this subject, the court observed inter alia that, I quote, horrendous acts of mobocracy cannot be allowed to overrun the law of the land, and the court warned that such incidents may rise like a typhoon-like monster across the country. And in the concluding paragraph of that 45-page order passed the day before yesterday, the Supreme Court has said, with your kind permission, I would like to quote a few lines only. Quote, we think it appropriate to recommend to the legislature, that is the parliament, to create a separate offense for lynching
and provide adequate punishment for the same. We have said so as a special law in this field would instill a sense of fear for law amongst the people who involve themselves in such kinds of activities. There can be no trace of doubt that fear of law and veneration for command of law constitute the foundation of a civilized society, unquote. The matter is posted for further hearing on 20th of August. Sir, only 1 minute I have spoken. Wow. So I am supposed to get 3 minutes. No, you as per will be the taking 2 convention. minutes and 1 minute for others. Please. Okay, sir. Now, I have not completed Take 2 one more minutes minute. even. So I would urge upon the government that since the matter is posted on 20th of August, before that or at the earliest convenience, the government should come up with a comprehensive legislation before both the houses of parliament. And finally, I condemn that a minister of this government, he is glorifying the people who are responsible for mob lynching. Thank you, sir. Yes, clarify. Sri Raja to associate. Raja to associate. Sir, I associate with my two colleagues, Mr. Shukandar and Mr. T.K. Rangarajan, in condemning the growing mob lynching in the country, in condemning the attack on Swami Agnivesh. Sir, I do not want to go to the historic root causes for mob lynching, but what is happening in the current period in our history, in the name of cow terror attacks, in the name of love jihad attacks, in the name of interfaith marriages, fighting against them, violence has been unleashed, and those who indulge in violence, they think they have the political patronage, and the target, sir, the data, I have a data, if government challenges me, I can provide the data. The target is overwhelmingly Muslims and minorities, Dalits. Why it should happen in our country? Are we not ashamed to discuss mob lynching at this point of time? We claim we are a civilized nation. We claim we are a civilized society. What is happening to our fellow citizens? Dalits are being lynched. Right. Muslims are being lynched. Minorities are being lynched. Are we proud of calling we are all we are citizens of this country? Sir, I am ashamed. I am pained. Right. And the way Swami Professor Manoj Kumar Jha to associate. Attacked. Sir, we should discuss, sir. It is a larger issue, and government should respond, sir. What is happening, sir? Right. Honorable. Right. You want to associate. Yeah, I'll just associate, sir. I'll not take more than 60 seconds, sir. Vijaya Satyanath. Sir, I'll just take 60 seconds, No, sir. please. No. 60 seconds. That's not the system, please. Sir, just 60 seconds. No, please. Sir, please. Madam Vijaya. No, you have to say I am associating with this. Thank you so much, Chairman, sir. No, please. No. I can't allow everybody to speak like this, please. Try to understand. My time is Professor, you are also aware of the rules, my please. time is going off. Please. Kindly correct. Thank you, Chairman, That sir. is the problem again. Actually, indeed, I am a very great fan of your quick wit liner, one-liner, and also catchy rhymes. And coming to the point, in Tamil Nadu, 1,14,602 students, they wrote NEET exam this year. And out of which 24,000 has written in Tamil question paper. And the CBSE says, out of that 49 questions in the Tamil paper were wrong and vaguely worded due to mistranslation. And now the CBSE says that they should have verified the English version of the question. Why there is an ambiguity? If there is a Tamil version of the NEET question paper, why should the Tamil medium students rely on the English version of the question? So great confusion, great agony. So now the public interest litigation filed before the Madurai bench of Madras High Court, or Honorable T.K. Rangarajan ji, filed, and the court has awarded 196 grace marks. The CBSE has to award 196 grace marks to the students who have written in Tamil. And now, first round, already our students have got untold sufferings, because some of the students, they were forced to write their exams in Rajasthan. Some of the students, the Tamil Nadu students, went to Sikkim for writing the entrance, and the other students, some they have wrote exams in Ernakulam, and where they were forced to remove their nose pin and nose
rings and ear rings, the second studs and so and so. And they were also, the girl students were asked to remove their dupattas. So great anguish, agony, lot of tension, confusion, mental stress. The parents went into untold sufferings. One parent died while taking his, so now the CBSE has appealed. Now tomorrow there is, the hearing is posted. And now who are answerable? The government is answerable for the hardship, stress, mental agony, suffering of the students. And whatever the court order may be, the union government has to increase the seats. Okay. So increase the seats because already the first counseling is over. From Right, July Vijay ji. 1 to The July minister 7. want to say the anything? first counseling, Please. 41 seconds. Take advantage, So ma. first Take counseling advantage is of the over, minister's presence. And already Vijaya, the 2000. I try need to the understand. answer He is from there. the Minister. That's- Yes, Honorable Minister has See- answered. Already some students have been. Please, please. Okay. Yes, thank you. नहीं सर, ये मसला अभी कोर्ट में है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ट्रांसलेशन का पिछले साल ये मुद्दा आया था कि बाकी जगह बाकी भाषाओं के हिंदी इंग्लिश का अलग पेपर था और दूसरे का अलग था, इस बार एक ही पेपर था। और ये जो ट्रांसलेशन किया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ही ट्रांसलेटर्स दिए थे। अब अगले साल से हम हर राज्य सरकार से ये भी एफिडेविट लेंगे कि ये ट्रांसलेशन करेक्ट है, तो ये करेक्शन करेंगे, लेकिन तब तक जो हुआ है वो कोर्ट का मसला है, तब तक कोर्ट में But also, मैं नहीं बोलूँगा। please, but also take note, why should the children of Thiruvananthapuram or Kanyakumari go to Rajasthan? That thing I have already ordered कि correction from next year there will be no displacement. जिस जिले में है उसी जिले में वो रहे करेंगे, जहाँ जिस जिले में सेंटर है उसी सेंटर के शहर में उनको मिलेगा। अभी आगे से ये नहीं होगा। Vijaya ji, please, at least you got some assurance now. Nobody is responsible now. We got a response. The response is the student, Maitreyan, please, not government, they are people provided by the government. Please sit down. You hear, try to hear now, you got some at least assurance. I am also equally concerned. No cross questioning, no answer. I am also concerned because I am familiar with what is happening. Now the minister has assured the House that the students of a respective district or a state need not be going to other states. They will have the facility to write exam in their respective places. That will be one relief. That will be happy about. Then Sri Rajiv Chandrasekhar, please. Sri Rajiv Chandrasekhar. Sri Manas Ranjan Bunia, please. Maitreyan, there is a rule here, there is some position house also. Please, Siva. Either it is Maitreyan or Lord Siva, rule is the same. Please sit down. Sri Manas Ranjan Bunia. Thank you, Chairman Sir, for allowing me to speak on the 0 hour for a very important issue in our state, West Bengal, particularly southern part. The Government of India accorded techno-economic clearance, the project for the Kaliaghai-Kapaleshwari-Baghai drainage basin scheme on 28/1/2010 at the cost of rupees 650 crore. Then the Planning Commission accorded sanction on 9/3/2010. Sir, till date, it was accepted the ratio formula between the central government and the state government that the central government will provide 75% of the sanctioned project and the state will contribute 25%. Among rupees 650 crore, till date, rupees 325 crore have been given and utilized fully. It is surprising, I am drawing the attention of Honorable Finance Minister and Minister of Water Resources through you, that a project of the flood control and flood management is not getting the financial support of the union government. Only 162 crore
have been given by the central government and Ministry of Water Resources and Finance Department till date. How a project which has been sanctioned in 11th plan period continued as a spillover effect. Honorable ex-Prime Minister Dr. Manmohan Singh is here. He helped me a lot for the people of more than 22 lakh in the southern part of Bengal. But unfortunately, due to some unknown reasons, we are not getting any financial support from the central government for the last 2.5 years. As a result, the project is half completed and the people are suffering. The objective of the flood management program is completely stopped and it is frustrated. So I want to know, sir, just a minute. I want to know through you, and I demand a statement from the Ministry of Water Resources by Honorable Minister and Finance Minister. What are the reasons to deprive West Bengal by not providing the fund for Keleghai, Kopaleshwari, Baghai Basin project? Thank you. Which should be given in the tune of 75% in the ratio. I request you to give direction to the Honorable Finance After 3 minutes, sir, automatically and Minister of Water Resources for state. Raju Chandrasekhar. Sir, thank you, sir. Right. I wish to raise the growing menace of drug abuse amongst children in my city of Bengaluru, sir. In the light of an ongoing discussion in the Karnataka Legislative Assembly about the drug menace, especially in Bengaluru, where Bengaluru is increasingly becoming the hub of drugs in South India, the Assembly discussed the measures they would be taking under the Gunda Act, that is the Karnataka Prevention of Dangerous Activities of Bootleggers, Drug Offenders, Gamblers, Gundas Act 1985, to control the problem of drug abuse amongst children in my city of Bengaluru, sir. Sir, the Indira Gandhi Institute of Child Health and the National Institute of Mental Health and Neurological Sciences, NIMHANS, have been cautioning about the rising trend of large amount of drug-addicted children that are visiting them for consultation and cure. The Narcotics Control Bureau of Bengaluru in the last 2 years have given a clear indication of the rampant drug abuse and the rise of it in my city. In February 2018, sir, officers of the NCB zonal unit seized 36.6 kgs of marijuana from a bus stand and 28.6 kgs at yet another bus stand. These are just a few of the reported cases of a surge in drug use and trafficking in our city. Sir, according to the NCB officials, youngsters are more vulnerable to drug addiction. Drug peddlers know this and prey mostly on them. The network of peddlers are not just well connected in Bengaluru and other cities in Karnataka, they are also connected with other cities in the south of India. It is about time something is done before the situation gets irreversible and a whole generation of children become addicts. So there is a need for a strong national mission that includes laws prescribing harsh penalties for drug peddling, drug consumption and sale. And I request the Government of India to intervene in this, sir. Thank you, sir. Thank you. Yeah. All the people who have raised their hands, please send a slip, because my office is telling me taking down the names of such large people within that short period is not possible. So please send a slip, your name will be included. Sri Sambhaji Chhatrapati. Well, Chairman, sir, commending the implementation of GST, I have a few suggestions related to tourism and industry. While safety and security, hygiene, cheating by touts, lack of basic tourism infrastructure are the common problems faced by the international tourist, abnormally high room tariff, cost for food and beverages, besides high GST charges making India a costly tourist destination. Now coming to GST, government has imposed different GST rates depending upon the tariff of the room rent, which are 28, 18% and 12%. The GST on restaurants offering food and beverages located outside the hotel premises is 5%, whereas those restaurants located within the premises of the hotel with room rent amounting to Rs 7,500 charge at 18%. In view of the quality, maintenance and better service, the domestic and international tourists prefer to stay in star category hotels. But apart from the higher room tariff, which is almost the case, is about 7,500 rupees per day, the applicable rate of GST is abnormally high at 28%.
So even if 7,500 is taken as a minimum room rent, the domestic and international tourists have to pay around rupees 10,000 per day. I raised the issue in right earnest that higher GST is an impediment in growth of tourism in the country because of low paying capacity of larger section of domestic and international tourists. Now, after the people are much enlightened on hygiene and sanitation, most of them prefer to stay in the hotels where room tariff slab is higher. But after adding differential rates of GST, that is 28, 18 and 12% on room tariff, the total payable amount goes up substantially, which pinches the pocket of domestic tourists. Simultaneously, the hotel operators who run these categories of hotels get lesser business, which ultimately results in low occupancy. So since India is striving hard to attract tourists, it is necessary that GST or room tariff in hotels, foods and beverages rates are fixed in keeping in mind the situation prevalent in other countries. Sambhaji, here afterwards you have, you have to speak, you should not read. What I mean is that the room tariff and expenditure incurred on food and food beverages by a tourist should be reasonable to compete than with the other nations. Thank you. See, Hussain Darvi to associate. आधा मिनट बोल Then GST परंपरा बन जाएगा. आने वाले लोगों को 18% लगाई है सरकार ने, वो पीछे लेने चाहिए. मेरा ये कहना है धार्मिक स्थलों पे कौन से भी धर्म के लोग होने दो, उनके ऊपर जीएसटी लगाना बिल्कुल गलत बात है. सरकार ने इसके ऊपर सरकार का ध्यान आपकी तरफ से मैं लेना श्वेत मलिक. मैं आभारी हूं सर कि आपने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मैं बोलूंगा कि आज पंजाब में सरकार की लापरवाही से अघोषित इमरजेंसी है. आज नशीला विषय बताइए प्लीज. प्रश्न पे आ रहा हूं कि आज जो नशों का वहां पे खुलेआम वितरण हो रहा है, जहां ये था कि नौकरी घर घर पहुंचेगी, वहां नशा घर घर सर पहुंच रहा है. बच्चे बच्चियां आज पंजाब में मर रहे हैं और माताएं जो हैं उनका जो रुद्रन है वो देखा नहीं जा रहा है. कि आज जब ये नशा इतना आसानी से सबको उपलब्ध हो रहा है तो सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर वहां पे आज. और आज स्थिति ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी हालत है कि माताएं बहनें रात को पहरा दे रही हैं कि जो नशा बेचने वाले हैं सर. तो मैं इसमें जो प्रश्न करने वाला हूं कि आज जो पंजाब था वो फूड बास्केट था, आज पंजाब ड्रग बास्केट बन गया है. पंजाब की आने वाली जनरेशन के ऊपर खतरा है सर. मैं मांग करूंगा सर कि केंद्र जो है वो हस्तक्षेप करे, केंद्र जो है वो सुनिश्चित करे कि पंजाब के लोगों को नशों से बचाया जा सके. आज का विषय सभी राजनीतिक पार्टियों को मैं कहूंगा कि आज जो वहां का हाल हो गया है उस पे आज बहुत बड़ा खतरा है. तो मैं फिर निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से कि ये जो पंजाब सरकार की उदासीनता है इसके ऊपर केंद्र हस्तक्षेप करे और जवानी को वहां बचाए. Thank you. मित्रों, friend, hello. I would like to tell all the honorable members this is a 0 hour. And because of the concern about the issues, sometimes I am asking the ministers to respond, taking advantage of the presence of the ministers and getting some assurance or some action that will be good in the interest of the public, rather than try to score political point. You say that party, they say this party. At the end of it, it will be all party. And the result is we are not going to have a meaningful discussion. Please, I have seen some of the people excellently highlighted the point and then confined to the point within the time that is made available. You heard K.T.S. Tulsi on such an issue, lot of many other people also. So my suggestion is please confine to the issues and then try to extract information if the ministry is there and if he is willing. I am also have been telling the ministers also to the extent possible, please try to cooperate. So that take advantage of this situation and then try to get as much information as possible rather than politicalizing issue. I could understand elections are coming nearer, but that should not bother us. We should focus on the issues and larger public interest should be preserved by the House. That's my advice to all the honorable members, and not to say anything from their respective seats. Dr. Maitreyan. Dam safety. You want to say something? Yes, sir. इसमें 1 मिनट है.
clauses which violate the rights of Tamil Nadu, especially with respect to the dams constructed and owned by the government of Tamil Nadu in the neighborhood state, and would cause various problems in their maintenance and operations. Tamil Nadu Assembly unanimously adopted a special resolution. Now time is over. Thank you.